Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your English teacher, and because you are playing in your quarantine, and obviously I hope कि आप लोग पढ़े होंगे and you are completing your homework that school is providing you. लेकिन आप लोगों ने in order to continue your studies आपको course अपना start करने के लिए we are recording these lectures for you. I hope you will understand the lecture we are going to study today. Okay, first of all, this is Bright Modern English Class 4 book. You have to buy it, and today we are going to study this first unit in this book, that is in thanks. Okay, so I am going to read this poem out loud, and you will understand what I am explaining to you guys. Okay. We thank you, Allah, for a perfect day that we have spent in happy play. We thank you for the fun we had, with nothing there to make us sad. We thank you for each bright hour, for every bird and plant and flower, for lemon tart and chocolate cake, the kind that mothers always make. We listen to the birdies call and watch the jeweled raindrops fall. For all these things we do thank Thee with all hearts on bended knee. Okay, so in this poem, इस पोएम में पोएट जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा है हर उस चीज़ पे जो अल्लाह ताला ने उसको दी है. Everything. आप लोग अगर खाना खाते हो, आप you happily play with your friends, आप अपनी फ्रेंड्स के साथ हंसी खुशी खेलते हो, या आप अपनी आप अपनी मदर का हाथ का बनाया हुआ खाना खाते हो. Like everything you do daily, you wake up early in the morning. आप सुबह अल्लाह ताला आपको रोजाना एक नई जिंदगी प्रोवाइड करते हैं. You wake up early in the morning. आप उठ के अल्लाह ताला आपको आप जब उठते हो आपके आगे खाना पड़ा होता है, अल्लाह ताला वो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं. So इस पोएम में पोएट बेसिकली अल्लाह ताला से सारी उन नेमतों का शुक्र अदा कर रहा है. फॉर एक अच्छी जगह पे उसने उसने जाके खेला, अपने फ्रेंड्स के साथ उसने खेला, उसने एंजॉय किया, और कुछ भी उसको उदास, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई जो उसको उदास फील कराए. और एक इतना अच्छा एवरी द बर्ड्स आर चirping, बर्ड्स वहाँ पे वो they are chirping, flowers लगे हुए इतने प्यारे, grass है, look at the sky, look at the bright sunny day. कितना खूबसूरत दिन अल्लाह ताला ने आपको प्रोवाइड किया है. आपकी मदर आपके लिए खाना बना के रखती है, आपके फादर आपको पढ़ाते हैं, आपके साथ खेलते हैं. सो these are the blessings of Allah Almighty. अल्लाह ताला ने आपको ये नेमतें प्रोवाइड की हैं जिसका हमें अल्लाह ताला से शुक्र अदा करना चाहिए. ठीक है. सो बेसिकली इस पोएम में जो पोइट है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं उन छोटी छोटी चीज़ों का जो अल्लाह ताला ने उसको प्रोवाइड की है. ठीक है. तो हम अल्लाह ताला से ही मांगते हैं, अल्लाह ताला हमें हर चीज़ देते हैं. अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं. ठीक है. तो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, अल्लाह ताला हमें वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो उसका हमें अल्लाह ताला से शुक्र भी अदा करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमें और दें. ठीक है. अल्लाह ताला से हमें हर चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी नेमतें दी हैं. सो पोएट बेसिकली इस पोएम में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा है. ठीक है. ओके, दिस वाज द होल पोएम. आई होप आप लोगों ने इसको रीड किया होगा, और मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दिया. अब मैं आपको इसके वर्ड्स मीनिंग्स कराऊंगी और वर्ड सेंटेंसेस. आई हैव रिटन इट डाउन फॉर यू. ये वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं और ये वर्ड सेंटेंसेस लिखे हैं. ठीक है. मैं अगर आप लोगों को, आई होप आप लोगों को यहाँ से नजर आ रहा हो कि व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो यू कैन आस्क मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. मैं आपको बता दूँ, मतलब आपको मैं इसकी पिक्चर भी बना के भेज सकती हूँ. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू pronounce these words that I have written. We are going to do words meanings first. Words meanings में we have this first word perfect. P-E-R-F-E-C-T. Perfect. Perfect means complete. कोई भी चीज़ perfect हो. Like for example, this chart paper right here is perfect because it's complete. Everything is written over here.
हर चीज यहाँ पे लिखी है, so that is called perfect. ठीक है. The next word is spent. S-P-E-N-T, spent. Sorry. Being used. कोई भी चीज हम यूज कर लें, that is spent. For example, मैं जाके I just go in the shop और मैं जाके कोई चीज buy करती हूँ, कोई चीज खरीदती हूँ. So I spent money on it. ठीक है. मैंने अपने जो मेरे पास पैसे थे, मैंने उनको यूज किया. ठीक है, उनको स्पेंड किया just to buy that thing. तो किसी भी चीज को यूज करना is called spent. Bright, shining. Today is a bright day. Today, you know, the sun is shining. जब sun shine कर रहा था, that is a bright day. So today is a bright day. So that is bright means shining. Then the next word is birdies. Birdies क्या होती हैं? हम तो birds बोलते हैं ना. What are birdies? Birdies is basically a child's term for bird. Like for example, जो kids होते हैं ना, जैसे आप लोग भी छोटे छोटे जो kids होते हैं, they call bird birdies. Like this is such a soft word. ठीक है, soft सा word होता है, वो इन तो छोटे बच्चे जो हैं वो ये यूज करते हैं birdies. And there is no difference between birds and birdies. Bird भी वही चीज है, birdies भी वही चीज है. ठीक है. Okay. The next word is jewel. Jewelled. Jeweled means decorating. किसी भी चीज को decorate करना is jeweled. This class is jeweled. This board is jeweled because it's decorated. ठीक है. So basically, in context with the poem, we have this line, and watch the jeweled raindrops fall. Like when it's raining, तो क्या होता है कि इतने प्यारे प्यारे जो बारिश के कतरे होते हैं, they are jeweled, they are, you know, प्यारे लग. So that is basically referring to this word. The next word is bended. B-E-N-D-E-D, bended. To curve. किसी भी चीज को, you know, bend कर देना. For example, I bend this book. That is called bended. For example, I bend my knee because मैं इसको curve में लेके आ रही हूँ. What is curve? Curve is basically this kind of shape. ठीक है. So basically, I am bending in like, for example, I am bending my knee. मैं इसको curve में लेकर आ रही हूँ. ठीक है. So this is called to curve. Okay. So I hope you understood these word meanings. आप लोगों को इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो, you can ask me. ठीक है. I am there for you. आप लोगों को समझाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो, you can ask me. Okay. We are done with the word meanings now. Now we are coming back to the sentences. I have written it down for you. I hope आप लोगों ने इसको अपनी नोटबुक्स पे कर लेना है. अभी ही देखें इसको. कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे ग्रुप में अभी पूछ ले बेशक. I pronounce it for you. मैं आपको स्पेल करके बताऊंगी सारा कुछ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए. I have written it down for time saving, लेकिन अब मैं आपको यहाँ से पढ़ के बताऊंगी. The first word is perfect. P-E-R-F-E-C-T, perfect. She is a perfect lady. अभी हमने perfect का मीनिंग देखा. that is complete, बिल्कुल finished, मतलब बिल्कुल successfully completed. ठीक है. So she is a perfect lady. She is a complete lady. Everything has in it. Spent. S-P-E-N-T, spent. I spent the whole day cleaning. Spent का मैंने आपको क्या बताया था कि आप किसी चीज को यूज करते हो. ठीक है. spent का ये मतलब होता है ना कि किसी भी चीज को यूज करना. So spent का हमने सेंटेंस बनाया है कि मैंने अपने सारे दिन को क्लीनिंग में इस्तेमाल किया, मतलब सफाई करने के लिए इस्तेमाल किया. So spent का मतलब होता है to use. Bright. B-R-I-G-H-T, bright. Today is a bright day. What is the meaning of bright? Shining. मतलब रोशन. ठीक है. bright का मतलब है रोशन. So today is a bright day. आज एक रोशन दिन है.
दिन डार्क कब होता है? जब व्हेन देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, जब बारिश होने वाली होती है, आपका थंडर स्टॉर्म फोरकास्टेड होता है, एक्सपेक्टेड होता है, तब हमारा थोड़ा सा डार्क भी होता है। अदरवाइज व्हेन द सन इज शाइनिंग, तो दैट इज कॉल्ड अ ब्राइट डे। ठीक है। बेंड, द नेक्स्ट वर्ड इज बेंड। He begged on bending knee for another chance. Begged का क्या मतलब होता है? किसी से मांगना। ठीक है। एक कोई भी इसका सेंटेंस ये है कि he begged on bended knee for another chance. Like for example, आपने आपकी मदर आपसे नाराज है, ठीक है, so you are going to her and you are bending your knee, say mama please I'm sorry, so that is basically the sentence कि उसने एक another chance मांगा, sorry is another chance, ठीक है, so वो bend अपनी knees bend करके अपने मामा को sorry कर रहा है, so that is bend. The next word is jewel. Jewelled. Jewel. Health is a jewel. What is health? Health, अल्लाह ताला ने health is actually अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत, हमें तंदुरुस्ती दी हुई है, ठीक है, so that is health. So health is basically a jewel, यानी हमारे लिए बहुत हमारे लिए कीमती एक चीज है, correct. So we are done with the sentences now and word meanings. आज हमने बुक की अपनी पोएम की रीडिंग की है, वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट किए हैं, वर्ड सेंटेंसेस कंप्लीट किए हैं. I hope you have written them down on your notebooks. आपने अपनी नोटबुक्स पे ये सारा काम लिख लिया होगा. When you are going to come back, तो I am going to check your notebooks. और आई होप आप लोग मैं बिल्कुल उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग अपना सारा काम कंप्लीट करके आएंगे whenever you will come back to school. ठीक है, और that's it for today. और आपको इसमें से कोई चीज नहीं समझ आ रही, कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ समझ आ रहा, ask me in the group right now. Okay, thank you so much and best of luck. लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें